So this is the question number 16 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked out of these three statements which one of them will generate error. So in order to answer this one, first of all you need to be aware what are the access modes we have and what are the allowed operations we have for this particular access modes. तो इन जनरली अगर मैं बात करूं तो वी हैव थ्री मोड्स आर ए एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर रीड अपेंड एंड राइट मोड। तो अलाउड ऑपरेशन कौन कौन से हैं आपके? रीड मोड में रीडिंग ओनली, डब्ल्यू मोड में राइटिंग एंड ए में भी क्या है आपकी राइटिंग। हाउएवर एक प्लस कंजक्शन भी होता है आप which can be used with r a and w as r plus a plus and w plus। प्लस लगाते क्या होगा? You will be able to use both reading as well as writing function। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू दिस वन। नाउ आप क्या कर रहे हो? एक फाइल ओपन कर रहे हो इन डब्ल्यू मोड। सिंस डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन कर रहे हो तो यू विल बी अलाउड ओनली राइटिंग ऑपरेशन। जैसे हमने आपको बताया कि डब्ल्यू मोड में क्या रहेगा आपका? ओनली राइटिंग ऑपरेशन। ओके, सो नाउ इन द लाइन नंबर 2, तो दिस लाइन इज फाइन बिकॉज पाइथन को क्या है, उसको नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हो फाइल के साथ। नाउ इन द लाइन नंबर 2 यू ट्राइंग टू रीड द डाटा। सिंस यू ट्राइंग सिंस जी इधर ध्यान दीजिए, since you are opening a file in writing mode but you want to read the data from it, so it will give us error. So in this case statement number 2 will give us error. Why? Because we are trying to read the data, however we have opened the file in the writing mode. Hence for this one option number B is the correct one. Now based on the similar concept I have a practice question for you. You need to answer this one in the comment box what will be the right answer for it. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.